Namaskar and welcome. This is Midday Prime on DD News and DD India, where we look at news as it develops in India and in the world, and also from the worlds of business and sports. And time permitting, we'll also look at some stories impacting lives, art and culture. But for the moment, COVID updates continue to be the main focus, and there was also another drone spotted in Jammu and Kashmir. So here's the big news at this hour. COVID-19 vaccination coverage reaches more than 34 crores in the country. More than 42.64 lakh vaccine doses administered in the last 24 hours. Less than 50,000 daily new cases for the fifth consecutive day. Recovery rate increases to 97.01%. The central government rushes teams to 6 states for COVID-19 control and containment measures. The teams sent to Kerala, Arunachal Pradesh, Tripura, Odisha, Chhattisgarh and Manipur. They are reporting a high number of COVID-19 cases there. Union Minister Prakash Javadekar virtually launches 6 technology innovation platforms. He says that they aim to open door of new technology for India's intelligence, which will lead to a technological revolution in the future. The Indian Army inducts the first batch of 12 indigenously designed and developed by DRDO short-span bridging systems. The Army Chief General Naravane says that the induction of the bridging systems will boost the Army's capabilities, especially in the western borders, and will also help the mechanized forces. Sources say a drone was spotted inside the Indian High Commission in Islamabad, Pakistan. India strongly objects to the security breach. Earlier, a Pakistani drone was seen on the international border in Arnia sector. Meanwhile, 3 terrorists were gunned down in an encounter with the security forces and terrorists in Hajin, Rajpura, Pulwama. India joins the OECD and G20 inclusive framework tax deal. The majority of the members adopt a consensus solution to address tax challenges arising out of digitalization of the economy. In the Euro Cup football, 3-time European champion Spain will be clashing with Switzerland in the first quarter-final today, and Belgium will take on Italy in the second match later. And let's now begin with the big story. Well, the centre has deputed multidisciplinary teams to 6 states. These are Kerala, Arunachal Pradesh, Tripura, Odisha, Chhattisgarh and Manipur. And this is for COVID-19 control and containment measures. So the union government has been leading the fight against this global pandemic with a whole of government and a whole of society approach as an ongoing effort to strengthen the efforts of the states and union territory governments for COVID management. The central government has been deputing these teams from time to time to various states and union territories. These central teams will assess the situation. They will suggest remedial action on public health activities to the respective state governments. And a copy of the report will be provided to the Health Ministry of the Centre, the Union Health Ministry. In a significant achievement, India's cumulative vaccination coverage has crossed a landmark, 34 crores it's crossed today. Cumulatively, 34 crores, 76,232 vaccine doses have been administered in the country. As the new phase of universalization of COVID-19 vaccination commenced from the 21st of June, more than 42,64,000 vaccine doses have been administered, and they were administered on Thursday, and 32,80,998 vaccine doses were administered as of the first dose.
and 9,83,125 vaccine doses were given as a second dose. This is in the age group of 18 to 44. This happened on Thursday. 8 states, these are Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Tamil Nadu, Bihar, Gujarat, Karnataka and Maharashtra have administered more than 50 lakh first doses of COVID-19 vaccines in the age group of 18 to 44 years. Well, the union government is committed to accelerating the pace and also expanding the scope of COVID-19 vaccination throughout the country in the new phase of the universalization of COVID-19 vaccination drive. The union government will procure and supply free of cost 75% of the vaccines that are being produced by the vaccine manufacturers in the country to the states and union territories, and more than 33.63 crore vaccine doses have been provided by the Government of India to the states and union territories thus far. And of these, the total consumption, which includes wastage, is 33 crore 77 lakh 22,514 doses. Further, there's 44 lakh 90,000 vaccine doses. They are in the pipeline. So they will be received by the states and union territories in the next 3 days. So let's take a look at the COVID-19 update from across the country. These are how the figures stack up. India has reported 46,617 new cases in the last 24 hours. The country's active caseload has declined to 5,09,637. So the active cases now constitute 1.67% of the total cases. And the total recoveries across the country so far stand at 2 crore 95 lakh 48,302. So 59,384 patients have recovered during the last 24 hours. So the daily recoveries, they continue to outnumber the daily new cases, and this has happened for the 50th consecutive day. The recovery rate has also been improving, and it now stands at 97.01%. The weekly positivity rate is below 5% and below 3%, in fact, currently at 2.57%. The positivity rate, which is daily positivity rate, is also below 3% at 2.48%. So it's been less than 5% now for 25 consecutive days. And testing capacity has substantially gone up. So 41.42 crore tests have been conducted totally. Well, the government of Karnataka has issued an addendum. This is to the special surveillance measures for people coming in from Kerala. So passengers with vaccination certificates of having received at least one dose of COVID-19 vaccine will be exempted from producing a negative RT-PCR certificate. The negative RT-PCR certificate not older than 72 hours will be compulsory produced by passengers coming to Karnataka by flight, bus, train, taxi. Also applicable for all flights from Karnataka, from Kerala to Karnataka. The government of Karnataka takes special surveillance measures for people coming from Kerala. Meanwhile, cases in Karnataka have declined. The state now has fallen to third place in the country in the number of active cases, as the recoveries and people who've been discharged continue to pick up. And well, the patients discharged in Bengaluru stood at over 10,000. New cases in Karnataka, 3,203 new cases in Bengaluru, 676 recoveries. So the new cases have stood at 14,302 are the total cases, out of which in Bengaluru 10,840 patients were discharged. So the deaths are 94, and the total tests there were 1,56,078. These were figures that were given to us. Aisha Khanam on the center teams in 6 states COVID situation in Karnataka. She's joining us now. Aisha, so what's the situation like now in Karnataka, and give us an overview of what the central teams will be doing, the central team there. Well, Mark, Karnataka has seen a significant decline in the positivity rate in the state, and this is now at 2%. And the fact that the central team have been rushed to a few states like neighboring Andhra Pradesh, Odisha, and other states also include Kerala, because these are the states where the new variant play a havoc, because Kerala is also seeing
large number of increase in the Delta plus variant. So hence, the central team is likely to consult the state governments and suggest their measures to contain the spread of the Delta plus variant. Whereas Karnataka is taking the precautions and measures to see to that the Delta plus variant from neighboring states do not enter the state as such. Hence, the state has made it mandatory for the people coming from Kerala and Maharashtra Yes. to bring the RT-PCR certificate and also at least show one dose vaccinated certificate. So government is being more cautious because right now the situation in Karnataka with regard to the number of positive cases is very low compared to these neighboring states. Hence, the state government thinks that the neighboring state, the Delta plus variant, could play a havoc if not controlled. So right Okay. now, the central teams which will visit the states like Telangana, Kerala, and other states will advise the government on setting up labs to test the genome sequencing of the Delta plus variant and also more measures and the equal distribution of vaccination in all these regions. Remember, vaccination is one step that could save lakhs of crores of lives. And here Yes. in Karnataka also, the government has set a target for itself to vaccinate the entire population by December end. And so far, over 2.5 crore people have been vaccinated in the state. And, Yes, Aisha. and the state has also set a record of 11 lakh vaccination per day. So hence, Karnataka government is now the Karnataka government has taken up the precautionary measures on war footing and also ramping up the infrastructure, the medical infrastructure in the state to see to that in case there is a third wave, there are less number of cases and people Okay. get immediate medical attention. Thanks very much, Aisha Khanam, for those inputs. Moving on then to our next story. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath chaired a meeting with the Team 9 over COVID situation in the state. This meeting continues to be the series of meetings which are chaired by the Chief Minister and he overlooks the preparedness of the state for the coronavirus. Well, in Mumbai, after many people reported being administered fake COVID vaccines in various housing societies, the BMC has issued new guidelines. This is for vaccination at the workplace and housing societies. So under these new guidelines, it's going to be mandatory to inform the medical officers of the BMC at the ward level before conducting any vaccination camp through private vaccination centers in the premises of the society. The housing societies or workplaces holding a vaccination camp will have to first cross-check whether the private vaccination COVID center is registered on CoWIN application. Further, the guidelines mandate appointing of a nodal officer from the society. The guidelines further state that the nodal officer will have to oversee and monitor the entire vaccination drive and inform the police and the local authorities if any malpractice is observed. So let's tell you what's happened in Mumbai. Meanwhile, 9,195 new cases were reported across Maharashtra on Thursday. 8,634 patients were discharged in the last 24 hours. 58,28,535 COVID-19 patients have been discharged after full recovery until today there. And the recovery rate in Maharashtra is at 96.01%. 252 COVID-19 deaths were reported in the state on Thursday. The case fatality rate in the state is 2.01%. In the Union Territory of Jammu and Kashmir, the Mughal Road and Sintan Road will open for general public from July 5. It is cited as a major development for people living in the Pir Panjal area, which is the shortest route to travel to Jammu and Kashmir, travel to Jammu from Kashmir. The Mughal Road is the road between Buflias, a town in Poonch district, and the Shopian district. The 84-kilometer road traces a historic route used in the Mughal period over the Pir Panjal Pass. It connects Poonch and Rajouri to Srinagar in the valley, reducing the distance
between Shopian and Poonch from 588 kilometers to just 126 kilometers. It is also touted as the alternate lifeline, in fact, of Kashmir. Time now to focus our attention on today's developing story. Well, a drone was spotted inside the Indian High Commission in Islamabad and Pakistan. The Indian High Commission strongly objected to it, and the matter was raised with the Foreign Ministry of Pakistan. Amritpal Singh now joins us with more inputs on this story. Well, Amrit, a bit of a nuisance, isn't it, that these things are happening, a number of drones being spotted, and now inside the Indian High Commission, things are getting a little out of hand, one would think. Not more than just a nuisance, it is a security breach at the least, and a clear breach of the Vienna Convention. Yes. Because any foreign mission in the host country is the property of that country where the flag flies. Yes. That means the Indian mission is India's property in Islamabad, which the Pakistan government under the diplomatic Vienna Convention has leased out to the Indian government. Any breach of that cannot happen without the permission of the Indian government. That means the airspace over it is a complete no-fly zone. These rules don't just apply in Pakistan, they apply anywhere in the world. The Indian security forces, for example, or the Indian police or Indian security establishment cannot enter the Pakistan High Commission in India without its permission, or have any sort of air surveillance over it, or for that matter, any kind of surveillance. In fact, it applies to diplomatic couriers, etc. They cannot be opened, Yes. etc. So all that is very clearly listed in the Vienna Convention for consular relations. Now, what has happened here is that the district, the diplomatic district of Islamabad, is a high security zone. It's a no-fly zone. No flying object. In fact, even the planes cannot pass over them. If they have to land at the airport in Islamabad, they have to take the circuitous route over Rawalpindi and not Islamabad, at least not the part of Islamabad which is the diplomatic district. So it's a clear security breach at the least. Now, given that it comes at a time when drones were used from the territory of Pakistan to attack Indian military installations for the first time, the airbase at Jammu, and there were at least other 4 sightings of drones operating from the territory of Pakistan just across the international border. This incident happens in Islamabad. This is a very serious matter, and Yes. the government of India has raised this up very strongly, lodged a protest with the Foreign Ministry of Pakistan in a note verbal sent to the MOFA of Pakistan, or the Ministry of Foreign Affairs of Pakistan. India has strongly objected to it. The details that we are getting right now are very sketchy, and they are on Right. sources. There is a briefing at 5 p.m. of the Ministry of External Affairs. We expect an official statement and more clarity to emerge this Sure. evening. But what we know as of now is that this incident happened over the weekend when a function was being held in the mission near the residential quarters of the mission, where drones were sighted. At least some Yes. reports say 2 drones were sighted intermittently. And after that, India objected very strongly and raised the matter with the Pakistani authorities. Mark? Amrit, thank you very much for those inputs. Moving on to our next story then, in fact, it's related. Earlier, the BSF Jawans on Jabowal border outpost in Arnia sector, Jammu region, observed a Pakistani drone this morning. The alert BSF Jawans fired 5 to 6 rounds towards the drone, which fled away, and the drone came in from the Pakistan post of Zumath, and it was flying near the international border. It was not permitted from crossing the fence. It was not allowed to cross over into the fence. The BSF said that the drone was a quadcopter and in fact belonged to Pakistan. So it was trying to cross
the border in Arnia sector, but because of the firing by the alert BSF Jawans, it returned immediately. The BSF said that the drone was meant for surveillance of the area. Jammu and Kashmir DGP Dilbag Singh said that there are indications that the Lashkar-e-Taiba is behind this, and it has executed dozens of such activities earlier, including weapon and IED dropping. देखिए, अभी तक का जितना इनिशियल एविडेंस सामने आया उसके हिसाब से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है, और बाकी जो पहलू हैं इसके अलग-अलग वो तफ्तीश के दौरान देखे जाएंगे कि ड्रोन पार से उड़ा या फिर बॉर्डर के आसपास से या इंटरनली कहीं से उसको उड़ाया गया। फिर इंडिकेशंस हैं कि लश्कर-ए-तौबा का इसमें हाथ शामिल है, क्योंकि लश्कर-ए-तौबा लगभग दर्जन से ज़्यादा गतिविधियां इस तरह की पहले कर चुकी हैं, जिसमें वेपन ड्रॉपिंग के केसेस भी हैं। So Ramesh Raina now joins us, filling us in with more details. Well, Ramesh, clearly this is not looking like it's dying down, and one incident after another that we keep reporting, and you're reporting it in the Jammu sector, this time on the international border. And it's a quadcopter, so we now know what the kind of drone is basically, and it's not really, it doesn't look like a weapons grade kind of a drone, it's for surveillance purposes. So this is, as I was asking of Amritpal, this is really a nuisance factor, in fact, and probably, I mean, a question of a security breach and all that, but it's just to irritate the Indian side. Good afternoon, Mark. Exactly, since we had a first low intensity blast, two blasts on the Jammu Air Force Station. After that, there have been reports of sighting of drones for several days, but officially we were not given information about that. But today, again in the morning, we had again Pakistani drone flying near the international border in Arnia sector, Jammu, and alert BSF Jawans, because after the Sunday incident, when the explosives were when IF base was targeted, the security has been tightened. So our Jawans, they were very much alert, and they just fired 5 to 6 rounds on this Pak drone, which fled away back to Pakistan. So, Mark, exactly, this is a new modus operandi adopted by Pakistan. Earlier, they were pushing in trained terrorists into this side of the border to create mayhem. They were killing innocent people here. Again, then there was another modus operandi adopted by Pakistan, that was to push trained militants into this side through tunnels. And so many, that so many tunnels have been detected by our alert troops on the international border, especially in Jammu division. Now, this new operandi adopted by Pakistan and our enemies is to use these drones to drop arms into our union territory and our neighboring state. And drug smuggling is also taking place. So many instances are there when we have seen Pak drones dropping arms into our territory. So exactly, this is a new modus operandi, and rightly we have made our army chief yesterday said that army is capable and is devising strategy to counter such acts. And we have been told by our sources that after this attack on in Jammu Air Force Base, anti-drone technology system has been installed at the Jammu Air Force Station, and radio frequency detectors and jammers have been installed, and some weapons have been installed at the Air Force Station, which can shut down any enemy drone. Mark. Okay, thanks very much, Ramesh Raina, for those inputs. So anti-drone systems being expeditiously installed in all these areas. In Pulwama, an encounter, 3 terrorists affiliated to the Lashkar-e-Taiba were killed. One army Havaldar was martyred during this encounter. The encounter broke out between terrorists and security forces at Anjan, Rajpura area of Pulwama, Jammu and Kashmir. This happened in the early hours today. The police, the army and the CRPF, they were on the ground when reports last came in, and they were winding up the operation. A search is underway. We unfortunately lost an army Havaldar last night during the course of firefight. A police, army and CRPs on the ground. They're winding up the operation. Presence of 3 more militants was reported, and after the operation is over, we'll come to know more details. News now from the nation in our National Prime segment.
The BJP has launched a full-scale attack on the Congress party and its leader Rahul Gandhi, saying that Rahul Gandhi lacks maturity and seriousness as a leader. Addressing the media in New Delhi, the BJP spokesperson Gaurav Bhatia said that Rahul Gandhi's utterances are an embarrassment to every citizen of the country. Mr. Rahul Gandhi lacks the maturity, the seriousness that should be there in a leader of opposition. He lacks the seriousness and maturity that should be there in a member of parliament. His utterances are not only an embarrassment to the leaders of his party, they are an embarrassment for every citizen of the country. The U-turns, the flip-flops, the contradictions in letters of Shrimati Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi reveal a lot. And they clearly reveal there is a sinister plot to defame our country. Well, the BJP spokesperson also said that the whole country unitedly is fighting the COVID-19 pandemic, but the Congress party and some other opposition parties are indulging in politics over the pandemic, and that's unfortunate. केंद्र सरकार भारत की जनता को सुरक्षा कवच दे रही है वैक्सीन के तौर पर। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी खासकर और कुछ विपक्षी दल हैं जो नहीं चाहते कि भारत कोविड को परास्त करे। श्री राहुल गांधी जी का एक ट्वीट आया और इस ट्वीट में लिखा है, जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। ये ट्वीट देख के किसी भी देशवासी को बहुत ही दुख होगा। राहुल गांधी जी, जनवरी आया, फरवरी आया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आया, लेकिन सद्बुद्धि कब आएगी आप में? कब वो राजनीतिक परिपक्वता आएगी कि आप समझेंगे कि विपक्ष की भूमिका भी सकारात्मक हो सकती है? Well, the Union Minister of Heavy Industries, Prakash Javadekar, launched 6 technology platforms in New Delhi today, and these platforms will boost India's need to progress and innovate new and useful engineering. The Union Minister said that this platform is an attempt to bring Indian stakeholders together, and its purpose is to open the doors for new technology to strengthen India's intelligence power. Its aim is to boost the path of technological revolution. This initiative, technology platforms, will bring all Indian stakeholders together, bring in right investment also, partnered by government, but essentially it's a stakeholders platform. And then with multiple effect, we can move ahead on research and development and bring out the solutions to the vexed problem. The Army has inducted the first batch of 12 indigenously designed and developed short-span bridging systems into the Corps of Engineers at Delhi today. The system has been designed by the DRDO. It's manufactured by Larsen & Toubro. It's indigenously developed, as we said, the 10-meter short-span bridging system. It was handed over to the Indian Army in the presence of the Chief of Army Staff, General M.M. Naravane. And an operational demonstration of these systems' capabilities preceded this ceremony. Our correspondent Nandita Daga reports that the system is mechanically launched and capable of carrying tanks over different types of water obstacles. It is compatible with existing bridging systems and allows more flexibility in negotiating water obstacles. The Army Chief, General Naravane, said
The induction of the bridging systems will boost the Army's capabilities, especially on the western borders, and will help the mechanized forces. आज ये बड़ी खुशी की बात है कि हम सारे यहाँ उपस्थित हैं 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज को इंडियन आर्मी में शामिल करने के लिए। ये शॉर्ट स्पैन ब्रिज पूरा इंडिया में बना है। इसका डिजाइन भी DRDO द्वारा किया गया और प्रोडक्शन L&T द्वारा। और ये हमारा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य का एक और सफलपूर्वक कदम है। इसके लिए मैं सभी जो इसमें शामिल थे, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डेवलपमेंट टीम, इंडस्ट्री पार्टनर और जो इसमें जवान भी शामिल थे, मैं उन सब की सराहना करता हूं। इस ब्रिज के इंडियन आर्मी में शामिल होने से हमारी जो काबिलियत है वो और भी बढ़ेगी। A National Investigation Agency team arrived in Patna, Bihar, along with 2 terrorists who were arrested in Hyderabad in connection with the Darbhanga station blast case. The terrorists were being taken to the anti-terrorist squad office when this report was filed, and they will be produced before a court. The National Investigation Agency on Wednesday, in fact, had arrested the 2 brothers, allegedly Lashkar-e-Taiba terrorists, in connection with a blast that happened earlier this month. That incident took place on the 17th of June when there was an explosion in a parcel on platform 1 of the railway station. Fortunately, nobody was injured. And let's go back to our previous story, in fact, where Nandita Dagar had filed a report. Let's watch that report. We have adversaries on our northern as well as western borders, and therefore in the case of hostilities or a war breaking out, it is important that that is the Indian Army is able to deploy men and material quickly. Therefore on the borders where the enemy has built canals, these bridges of 75 meters, that is the Sarvatra bridge, the 5-meter short span, the 10-meter short span, as well as the 15-meter short span bridges can bridge over canals, and they can provide quick movement of troops and materials where they are required in the case of a battle. With camera person Ajit in New Delhi, this is Nandita Dagar for DD News. Moving on then, the Union Finance Minister Nirmala Sitharaman visited Helix Biotechnology Park facility. This is in Bengaluru in Karnataka. And during her visit, the Finance Minister interacted with leaders from the biotechnology sector as well as startups. And she was accompanied by the Deputy Chief Minister of the state, C.N. Ashwatha Narayan. Nirmala Sitharaman represents Karnataka in the Rajya Sabha. India has joined the OECD G20 Inclusive Framework Tax Deal. A majority of the members of the OECD G20 Inclusive Framework on base erosion and profit shifting, including India, they've adopted this statement containing the outline of a consensus solution to address tax challenges from digitalization of the economy. The proposed solution consists of 2 components. Pillar 1 is reallocation of additional profit to market jurisdiction, and Pillar 2 is a minimum tax which is subject to tax rules. So some significant issues like the share of profit allocation and scope of subject to tax rules, these remain open and they need to be addressed. But the technical details of the proposal will be worked out in the coming months, and a consensus agreement is expected by October. India is in favor of a consensus solution which is simple to implement and also simple to comply with. And at the same time, this solution should result in the allocation of meaningful and sustainable revenue to market jurisdictions, particularly for the developing and the emerging economies.
And the Organization for Economic Cooperation and Development has said some 130 countries and jurisdictions, they have signed up to the global tax reform, ensuring that multinationals pay their fair share wherever they operate. The OECD in a statement said that global companies, including the US big companies like Google, Amazon, Facebook, and also Apple, they would be taxed at a rate of at least 15%. The new tax regime will add some $150 billion to government coffers globally once it comes into force. And the OECD said that it's hopeful that that will happen by 2023. Well, it's time for a break here on Midday Prime, but Business Prime and other stories are coming up, so stay with us. हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। Welcome back, and let's see what's keeping the economy abuzz. And over to Tanvi now for Business Prime. Over to you, Tanvi. Thank you, Mark. In Business Prime, up first, Reserve Bank of India RBI Governor Shaktikant Das said that the second wave of COVID-19 had a grievous toll on the country, but economic activity has started to look up in late May and early June this year. Writing in RBI's biannual financial stability report, Shaktikant Das said the recovery that had commenced in the second half of 2020-21 was dented in April-May 2021, but with the wave of infections abating and as rapidly as it had set in, economic activity has started to look up in late May and early June. RBI Governor further said that the stepped-up pace and scale of vaccination is helping communities gradually releasing the economy from regional and localized containment measures, but there should not be any complacency by way of letting the guard down. Das said capital and liquidity buffers at financial institutions are reasonably resilient to withstand any future shocks. He said while the recovery is underway, new risks have emerged on the horizon, including the firming up global commodity prices and inflationary pressures and rising incidents of data breaches and cyber attacks. The nation's gradual recovery from COVID-19 second wave in June has had a positive impact on the Unified Payments Interface (UPI) ecosystem, which reported a month-on-month 10% spike in transaction volumes and 11.5% spike in value of transactions. During June, the National Payments Corporation of India (NPCI) clocked a record 2.8 billion transactions, up 10% month-on-month. It also reported transactions worth 5.47 lakh crore rupees. Its previous best performance since its inception was in March 2021.
Next, we update you on the domestic stock markets. Well, they have recovered after being slightly in the red in morning trade on Friday. So the Sensex at the BSE had added 81 points to 52,400 in afternoon deals a short while ago. And the Nifty at the National Stock Exchange had gained 20 points to 15,697. In the broader market, the BSE mid-cap index had climbed 0.1%, but the small-cap index had jumped 1%. Well, thanks very much, Tanvi. But Piyush Goyal, the Union Minister for Railways, Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution is addressing the media. Let's go across. BVR Subramaniam ji. The press conference will be conducted in the following manner. First, Honorable Minister Shri Piyush Goyal ji will make opening remarks. After the opening remarks, there will be a presentation. Afterwards, we shall take questions, which would include questions received from press persons from all over the country, through WhatsApp and online. Over to Honorable Minister, sir. Thank you very much. मित्रों, भारत कोविड महामारी से जैसे कि पूरे विश्व में अन्य देशों में बड़ी समस्या है, वैसे ही भारत में भी कोविड की महामारी ने एक बहुत बड़ा धक्का अर्थव्यवस्था को अलग अलग क्षेत्रों में पिछले वर्ष पहुंचाया था। उस परिस्थिति के बाद एक तरफ भारत ने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारा, स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाया, दूसरी तरफ अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई सारे अहम कदम उठाए गए। आत्मनिर्भर भारत के तहत आर्थिक दृष्टिकोण से कैसे देश पुनः एक बार तेज गति से विकास करे और उसी के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में भी सेक्टर स्पेसिफिक इंटरवेंशंस के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को गति दी गई। उस पे बहुत मेहनत गई है गत एक वर्ष 15 महीने में और उसी के फलस्वरूप आज हमें आप सबको बताते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि भारत की अर्थव्यवस्था भी तेज गति से बढ़ रही है। भारत में जो निवेश आ रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो हमारी निर्यात है एक्सपोर्ट्स, उसमें भी बड़े पैमाने पे वृद्धि हो रही है। तो एक प्रकार से देश विकास की दौर में पुनः एक बार तेज गति से चल पड़ा है और ये भारत का भविष्य एक प्रकार से नींव रख रहा है भारत के भविष्य के लिए। भारत के भविष्य की एक छोटी झलक है जो हमें देखने को मिल रही है। सर्वप्रथम तो आपको मुझे बताते हुए खुशी होती है कि जो पहले 3 महीने थे इस वर्ष के, अप्रैल, मई, जून 2021, इन 3 महीनों में भारत ने अपने इतिहास का सबसे अधिक निर्यात एक्सपोर्ट अचीव किया है। हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट in the first quarter, April to June of any year in the past, has been achieved in April to June 2021, despite the severity of the second wave of COVID. और merchandise exports, जो goods export होते हैं, उसमें first quarter में $95 billion, $95 billion का एक्सपोर्ट भारत ने अचीव किया है, जो लगभग 7 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। 7 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट, $95 billion US is an all-time
high for the first quarter. अगर हम पिछले वर्ष की तुलना में देखें तो बहुत बड़ी वृद्धि है, पर पिछले वर्ष लॉकडाउन भी था, तो इसलिए हम पिछले वर्ष के बदले इसको 2019-20 2 वर्ष पहले के आंकड़े 2018-19 2 वर्ष पहले के आंकड़े से जब कंपेयर करते हैं तो 2018-19 में यही फिगर $82 बिलियन था, $82 बिलियन, यानी 82 से बढ़ के 95 बिलियन, 16% के करीब वृद्धि पहले क्वार्टर में 2 वर्ष पुराना जो नॉर्मल ईयर था उसके परिप्रेक्ष्य में हुई है। और फिर हमने पुराने सभी क्वार्टर्स जब देखे, और साधारणतः सभी आप लोग जानते हैं कि जो फोर्थ क्वार्टर होता है Q4 जनवरी टू मार्च, इसमें साधारणतः एक ज्यादा गति होती है अर्थव्यवस्था में और पुश दिया जाता है। तो अभी तक के कोई भी क्वार्टर देखें तो सबसे अधिक पहले 2020-21 में $90 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था पिछले वर्ष, यानी जनवरी टू मार्च 2021 में इसके पिछले क्वार्टर में हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एक्सपोर्ट $90 बिलियन का हुआ था। मुझे आपको सूचित करते हुए खुशी है कि फोर्थ क्वार्टर के हाईएस्ट एवर, और एक तरीके से कोई भी क्वार्टर के हाईएस्ट एवर के 90 बिलियन से ज्यादा 95 बिलियन हमने पहले ही क्वार्टर में एक्सपोर्ट अचीव किया है। 7 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत के एक्सपोर्टर्स का, भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम वर्ग की इंडस्ट्री MSME सेक्टर का, धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे किसानों को, धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे पशुपालन विभाग से जुड़े हुए सभी लोगों को, धन्यवाद देना चाहूंगा जो मरीन सेक्टर जिसने बहुत अच्छी तरीके से सभी दिक्कतों के बावजूद इस क्वार्टर में भी अपने एक्सपोर्ट्स को जारी रखा, और एक प्रकार से पूरी अर्थव्यवस्था को गति देने में ये एक्सपोर्ट की $95 बिलियन की परफॉर्मेंस ऑल टाइम हिस्टोरिक हाई एक झलक देती है आगे आने वाले कल की। इंजीनियरिंग गुड्स, और आप सब जानते हैं कि इंजीनियरिंग गुड्स क्वालिटी गुड्स होते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, इंजीनियरिंग गुड्स ऑटोमोबाइल्स वगैरह में भी बड़े पैमाने पे जाते हैं, और बड़े रूप में ये रोजगार का साधन बनते हैं। इंजीनियरिंग गुड्स में $5.2 बिलियन का बढ़त हुई है अप्रैल से जून के बीच, यानी लगभग 35-40 हजार करोड़ की बढ़त सिर्फ इंजीनियरिंग गुड्स में इन 3 महीनों में हुई है। इसके अलावा भारत का चावल जो विश्व में बहुत प्रसिद्ध है, भारत की जो मसाले हैं स्पाइसेस, इसी प्रकार से ऑयल मिल्स, जैसा मैंने पहले कहा फिशिंग सेक्टर से मरीन प्रोडक्ट्स, इन सब में भी भारी वृद्धि हुई है इन 3 महीनों में। और वास्तव में ये तभी संभव हो पाया जब इसके ऊपर एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव, हर प्रकार से इसके ऊपर मेहनत की गई सरकार द्वारा, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स द्वारा, इंडस्ट्री एसोसिएशंस द्वारा, और हमारे सभी स्टेक होल्डर्स जो एक्सपोर्टर्स हैं, इन सब ने मिलके इसको संभव बनाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि बजट के तुरंत बाद उन्होंने जिस प्रकार से इंडस्ट्री के साथ, एक्सपोर्टर्स के साथ, इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ और विभाग के मंत्रालयों के साथ वेबिनार्स के माध्यम से प्रोत्साहन का अपना संदेश भी दिया और फीडबैक भी लिया कि कैसे अब इस आत्मनिर्भर भारत की जो उनकी कल्पना है, जो उनकी इस बजट के द्वारा, और ये बजट आप सब जानते हैं कि पूरे विश्व में
भारत के इस बजट की सराहना हुई है। इस बजट को लोगों ने बहुत प्रोत्साहन के साथ स्वीकार किया है, वेलकम किया है। उस बजट को कैसे कार्यान्वित किया जाए, उसको कैसे जमीन पे उतारा जाए, कैसे इसकी सफलता को सुनिश्चित किया जाए, इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रकार से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट देश के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा करके कैसे इसको सफल बनाया जाए उसमें पहल की थी। साथ ही साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, इंडस्ट्री एसोसिएशंस, एक्सपोर्टर्स सबके साथ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड श्री गिरधर जी हमारे सेक्रेटरी साथ में हैं, श्री BVR सुब्रमण्यम कॉमर्स के सेक्रेटरी साथ में हैं। सभी हम तीनों ने मिलके और हमारे सभी अधिकारियों ने दिन रात एक करके 24 घंटों कंट्रोल रूम्स चलाए। जिसकी जो समस्या सामने आती थी उनको हफ्ते और दिन तो छोड़ो, घंटे और मिनटों के अंदर कैसे सुलझाना, राज्यों से बात करना, इंटर मिनिस्टेरियल कंसल्टेशन करना। तो मैं सभी अधिकारियों का, सभी इंडस्ट्री एसोसिएशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स का भी धन्यवाद करना चाहूंगा इस बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए। सभी मंत्रालयों ने भी बहुत इसमें हमारी मदद की, इंटर मिनिस्टेरियल भी बहुत इसमें सपोर्ट रहा। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में बहुत सारे अहम फैसले लिए गए जिससे कभी भी कोई तकलीफ नहीं हो। जब पता चला कंटेनर्स की शॉर्टेज है किधर, तो रेलवेज में या तो मुफ्त में या बहुत ही कम खर्चे में एम्प्टी कंटेनर्स मूव किए वहाँ। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में जिसके सेक्रेटरी गिरधर जी भी हैं, रोड ट्रांसपोर्ट ने जहां भी बाधाएं आई उसको तुरंत रिजॉल्व किया और फास्टैग के माध्यम से और GST के माध्यम से वैसे भी रोड ट्रांसपोर्ट बहुत सरल हो गया है। तो एक प्रकार से सभी ने मिलजुल के जो प्रयत्न करे और जो माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार हमें प्रोत्साहित करने के लिए कहते हैं कि सरकार एक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सब सरकारों को मिलके एकजुट होके गवर्नमेंट एज अ होल काम करना चाहिए। एक प्रकार से ये उपलब्धि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रोत्साहन को डेडिकेट करना चाहूंगा कि सब ने मिलके और प्राइवेट सेक्टर को भी जिस प्रकार से उन्होंने प्रोत्साहित किया। बजट के बाद उनके जो भाषण हुए, बजट के बाद जब उन्होंने पार्लियामेंट पे अपना भाषण में निजी क्षेत्र को भी एक प्रकार से अहम भूमिका निभाने के लिए कहा, उनके भी क्षेत्र के योगदान को रिकॉग्नाइज किया, वैल्यू किया। इन सभी के कारण हम आज इस स्थिति में आए हैं कि मंत्रालय ने तय किया है कि इस वर्ष निजी क्षेत्र के साथ EPCs, इंडस्ट्री एसोसिएशंस, आप सबके सहयोग से MSME सेक्टर, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, स्टील मिनिस्ट्री, हम सब मिलके इस वर्ष $400 बिलियन का एक्सपोर्ट का टारगेट रखेंगे, इस पे काम करेंगे और आगे आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य सरकारें मिलके, निजी और सरकारी क्षेत्र मिलके इस $400 बिलियन के एक्सपोर्ट टारगेट को, जो अभी तक मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं, जो अभी तक कभी हमने पास्ट में अचीव नहीं किया है, उसको पार करने की एक कोविड के बावजूद इतिहास रचने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सर्विसेज सेक्टर से भी कल बड़े विस्तार से विभाग ने चर्चा की है। मुझे आपको सूचित करते हुए खुशी होती है कि पिछले वर्ष कोविड के बावजूद सर्विसेज ने भी घर से काम करके जो कठिनाइयां आई उसके बावजूद 97% लगभग एक्सपोर्ट का जो पिछले वर्ष 18-19 का फिगर 19-20 का जो फिगर था उसको 2021 में भी 97% अचीव किया
और कल जब नैस्कॉम के साथ मेरी बात हुई तो उन्होंने ये तो लक्ष्य स्वीकार कर ही लिया है कि 2025 तक आज का जो उनका एक्सपोर्ट है उसको लगभग डबल करेंगे, शायद डबल से भी ज़्यादा, $350 बिलियन का उन्होंने लक्ष्य रखा है। लेकिन कोशिश करेंगे कि 2025 तक 350 को भी पार करके सर्विसेज सेक्टर $500 बिलियन तक जाने की कोशिश में जुट गए हैं। इसमें नैस्कॉम भी है, इसमें बाकी भी अन्य क्षेत्र भी हैं। टूरिज्म को फिर से एक बार इस कोविड की वैक्सीनेशन को हम फास्ट रोल आउट कर लें, एक बार विश्व वापस बिजनेस एज यूजुअल पे जाए, तो टूरिज्म में भी एक बड़ी छलांग लगाने की माननीय प्रधानमंत्री जी की तीव्र इच्छा है। और इन सब से गुड्स और सर्विसेज दोनों भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने में, हमारे लाखों करोड़ों नौजवानों को रोजगार का साधन देने में, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो उससे जो राजस्व कलेक्ट होता है वो भी बढ़ता है, उससे गरीबों की, सामान्य लोगों की, मध्यम वर्ग की और सेवा करने में हमें सहूलियत मिलेगी। हमारे आदिवासी भाई बहनों को, समाज के वंचित पीड़ित लोगों तक और वेलफेयर स्कीम्स लेके जाने के लिए हमें और बल मिलेगा। तो एक प्रकार से ये एक इंडस्ट्री गवर्नमेंट पार्टनरशिप का एक उदाहरण हम आपके सामने पेश करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। एफडीआई भी 81.72 बिलियन डॉलर, लगभग $82 बिलियन, यानी 6 लाख करोड़ के आसपास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में पिछले वर्ष आया है, जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। कोविड के बावजूद जब पूरे विश्व में एफडीआई घट रहा था और पहले क्वार्टर में पहले महीना अप्रैल में भी जो एफडीआई आया है वो पिछले वर्ष अप्रैल के निस्बत लगभग 38% ज़्यादा है। अब और मई जून के फिगर्स कंपाइल हो रहे हैं। आज स्टार्टअप्स जो डीपीआईटी ने रजिस्टर किए हैं उन्होंने 50,000 का आंकड़ा पार कर लिया है, जो 623 डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कोई ये ना सोचे मुंबई, गुड़गांव, दिल्ली और बेंगलुरु में या पुणे में स्टार्टअप्स है, सिर्फ 623 डिस्ट्रिक्ट्स में, ग्रामीण इलाकों तक में आज भारत के युवा युवती नौजवान देश की सेवा कर रहे हैं और 623 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्टअप्स अब रजिस्टर हो चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है, कुछ प्रेजेंटेशन में भी कुछ बातें आपके सामने रखी जाएंगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आज भारत की जो विश्वसनीयता है पूरे विश्व में, जो लोगों को विश्वास है कि इंडिया इज अ ट्रस्टेड पार्टनर, ये विश्वास आगे चल के और मजबूत होते रहेगा और ज़्यादा अच्छी तरीके से हम विश्व के साथ जब एंगेज करेंगे, अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, या इंडस्ट्री हमारी एंगेज करेगी या सर्विसेज जब हमारे एंगेज करेंगे, तो विश्व को ये कॉन्फिडेंस होगा कि भारत कैन बी ट्रस्टेड, द पीपल ऑफ इंडिया कैन बी ट्रस्टेड, इंडस्ट्री एंड बिजनेस इन इंडिया कैन बी ट्रस्टेड टू डिलीवर गुड क्वालिटी ऑन टाइम। और इस मंत्र को लेके हम विश्व के साथ भारत का निवेश भी, भारत में आने वाला निवेश भी और भारत से जाने वाला निर्यात भी और तेज गति से बढ़ाएंगे। ये मैसेज आपके माध्यम से हम पूरे देश को देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Will you quickly run through the presentation, Secretary? नेक्स्ट, जहाँ तक निर्यात का सवाल है, माननीय मंत्री जी ने आपको एक झलक बता दिया है और उसके मुख्य अंश क्या है वो भी आपको बता चुके हैं। मैं केवल दो ही चीज़ों को आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सबसे पहले इस क्वार्टर में Q1 21-22 में दो रिकॉर्ड कायम हुए हैं। पहला, Q1 का इस तरह का एक्सपोर्ट्स आज तक कभी नहीं हुए हैं। Q1 का ये सर्वाधिक निर्यात है। दूसरा,
किसी भी क्वार्टर में इतिहास में इतने एक्सपोर्ट्स हुए नहीं हैं। सो $95 बिलियन के जो एक्सपोर्ट्स Q1 21-22 में हुए हैं, या आज तक कभी भी किसी भी क्वार्टर में किसी भी वर्ष हुआ नहीं है। ये बहुत ही गर्व का बात है। जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इसके लिए सारे बिजनेस, सारे एक्सपोर्टर्स, सारे हमारे लघु उद्यमी, ये सभी की मेहनत का ये फल है और हमें विश्वास है कि इसी गति से हम आगे चले। तो माननीय मंत्री जी ने जो दूसरी बात कही है कि इस वर्ष हम लोग $400 बिलियन का एक्सपोर्ट्स का विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोग उसको हासिल करेंगे। यह आंकड़े 1 मिनट में ध्यान आकर्षित करूंगा कि कई बार लोग कहते हैं कि पिछला वर्ष कोविड की वजह से थोड़ा घटा है, 1920 जो वर्ष है, लेकिन अगर आप 2021 को कंपेयर करेंगे तो 19 के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो 19 के फिगर्स नॉर्मल फिगर्स हैं। उसके साथ भी अगर कंपेयर करेंगे तो पहला क्वार्टर उस वर्ष से 18% ज़्यादा है और हर महीना आप देखेंगे अप्रैल, मई, जून और तीनों फिगर्स आप देखेंगे $31 बिलियन, $32 बिलियन, $32 बिलियन। तो इस गति से जो चल रहा है ये बहुत ही उत्साहजनक है और इसी गति से अगर हम चलते जाएं तो निश्चित रूप से और भी रिकॉर्ड आगे स्थापित करेंगे। नेक्स्ट। So we were watching a press conference being addressed by the Commerce and Industry Minister, Mr. Piyush Goyal. But that's all the time we have for in this program of Midday Prime. Our programming continues. We'll be having doctors speak in a short while. Stay with us.